Hello, Madhya and you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. Social media platform X CEO Linda Yaccarino has announced her decision to step down from her role. She has led Elon Musk owned X for the past 2 years. While announcing her decision on X, she expressed gratitude to Musk for giving her the responsibility of protecting free speech and transforming X into the everything app. She called X a truly digital town square for all voices and the world's most powerful culture signal, and stressed that they would not have been able to achieve that without the support of their users, business partners and the most innovative team. She joined X, then known as Twitter, in 2023, about 6 months after Musk's takeover of the social media platform. Prior to joining X, she served as the chair of NBCU Universal Media's Global Advertising and Partnerships, The Hill reported. While she served as X's CEO, several changes were brought to the platform, including its rebranding from Twitter to X and numerous crises. Advertisers fled the site after Musk's takeover of X as he began introducing various content modernization policy and restoring previously banned accounts, including that of US President Donald Trump. Her departure from X comes as Musk wants to combine the social media company with the artificial intelligence AI from XAI, The Hill reported. Earlier in March, Elon Musk said that XAI had acquired X in a $45 billion deal. A court in Seoul on Thursday issued an arrest warrant for former South Korean President Yoon over his failed martial law bid and placed him in custody for the second time. Yonhap news agency reported senior judge at the Seoul Central District Court, Nam Se-jin, issued the arrest warrant requested by Special Counsel Joon Suk, citing concern that Yoon could destroy evidence. Joon Suk's team requested the court to issue an arrest warrant on 5 key charges, including Yoon's alleged violation of the rights of cabinet members by calling only a few to a meeting held shortly before he announced martial law on December 3. Yoon and his lawyers were present during the hearing and rejected all charges before the former South Korean president and was taken to Seoul Detention Center in Oewang to await the decision of the court. Yoon Suk-yeol has been accused of making a false martial law declaration document after December 3 to add legitimacy to his actions and had it signed by South Korea's then Prime Minister Han Duck-soo and then Defense Minister Kim Yong-hyun before discarding it, Yonhap news agency reported. The other charges faced by Yoon include his alleged order to the presidential spokesperson for press to distribute false statements denying his intention to destroy the constitutional order through the martial law attempt, his alleged order to the Presidential Security Service to block his detention by investigators in early January, and his alleged order to delete call records from secure phones used by 3 military commanders, Yonhap news agency reported. Yoon has been arrested for the second time. He was arrested for the first time in January when he was still in office. However, the court later agreed to his request to cancel his arrest and granted his release in March. Congress leader and National Students Union of India (NSUI) National in charge Kanhaiya Kumar, along with Bapu Yadav, who is an independent MP from Purnia Lok Sabha constituency, on Wednesday were snubbed by security from boarding a van during the Mahagathbandhan protest against electoral roll revision in poll-bound Bihar. The incident occurred when both leaders attempted to board the van carrying Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejasvi Yadav, but were stopped by security guards. Videos of the incident show Kanhaiya Kumar and Bapu Yadav being prevented from joining Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav on the van, sparking speculation about internal conflict within the alliance. The rally was part of the India opposition alliance's
protests against the Election Commission's decision to conduct a special intensive revision of electoral rolls in Bihar ahead of the state assembly elections. Earlier in the day, Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi warned that the pattern of electoral manipulation seen in Maharashtra could be repeated in Bihar. Speaking at the Bihar Bandh rally, Rahul Gandhi said the way there was vote theft in Maharashtra elections, a similar attempt is being made in Bihar. Gandhi also raised questions over the rise in voter numbers between Lok Sabha and Assembly elections in Maharashtra, alleging that all newly added votes went to the BJP. He claimed that the India Alliance's poor performance in the Maharashtra Assembly polls, despite a Lok Sabha majority, prompted a deeper data review that revealed suspicious voting patterns. ये उनका इंटरनल मामला है। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई, जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें तो 20 लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। The Supreme Court is slated to hear on Thursday a clutch of petitions challenging the Election Commission's decision to revise electoral rolls in poll-bound Bihar. According to sources, a bench of Justices Subhanshu Dhulia and Joy Malia Bhakti will take up the matter for hearing on July 10. On Monday, the Justice Dhulia-led bench agreed to urgently list a batch of pleas against the ECI's order directing special intensive revision SIR of electoral rolls in Bihar after a battery of lawyers, including senior advocates Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi, Gopal Sankara Narayan and Sadan Farasad mentioned it to urgent hearing. As per the plea, the SIR requirement asking voters to again prove their eligibility through a set of documents is absurd, since on the basis of their existing eligibility, most of them have already voted multiple times in the assembly as well as general elections. Amid the controversy, the ECI on Wednesday posted on X an excerpt for Article 326 of the Constitution of India, apparently to justify the ongoing SIR exercise in Bihar ahead of the ensuing assembly elections. Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu on Wednesday visited the flood-affected areas of the Siraj Assembly constituency of Mandi district. He stated that the Mandi district was the most severely affected, with heavy losses reported in the Sirai Assembly constituency. Heavy rains impacted Nachan Karsok and Siraj constituencies. The badly hit areas are Janjeli, Dunak and Basayak areas of Siraj constituency, which is the assembly constituency of Himachal Pradesh's leader of opposition and former Chief Minister Jairam Thakur. विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ। हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया।
और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जरूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान भेजा, यहाँ सामान की जरूरत ही नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे कि ये इस चीज़ की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा जरूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया है, प्रदेश में कोष बना है, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। Leader of opposition and former Chief Minister Jairam Thakur also said that the Chief Minister has come here to assess the damage, and it's not damage due to rain, but a disaster has struck here. The Chief Minister personally visited this place and said that he had never seen such a scene before. There has been immense damage here, and compensating for it is not easy but very difficult. नुकसान का जायजा लेने के लिए आए हैं। अभी तक हम बता रहे थे कि नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और ऐसे में सामान्य परिस्थिति के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। ये कोई ऐसे नहीं है कि बारिश के कारण नुकसान हुआ, ये तबाही हुई है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री जी खुद देख करके गए हैं और उन्होंने स्वयं इस बात को महसूस किया कि ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करना जो है इतना आसान नहीं है, कठिन काम है। और हमने कहा कि प्रदेश सरकार स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की रिहेबिलिटेशन के लिए बनाते हैं तो केंद्र सरकार के साथ हम भी टेकअप करेंगे जनरलाइज तरीके। Madhya Pradesh cabinet meeting was held under the chairmanship of Chief Minister Mohan Yadav at the Mantralaya in Bhopal on Wednesday, during which several decisions were approved. During the meeting, the cabinet approved the establishment of 66 new Anganwadi centers under the Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0 scheme and the Dharti Aba Tribal Village Utkarsh Abhiyan, and 134 related posts. Of these, 66 posts are for Anganwadi workers voluntary, 66 posts for Anganwadi helper voluntary, and 2 regular supervisor posts. An estimated rupees 15.21 crore will be spent on the scheme during 2025 to 26 to 2028 to 29, with rupees 9.55 crore from the centre and rupees 5.66 crore from the state. The cabinet also approved creation of a new organizational structure comprising 77,298 posts for the 3 power distribution companies, including 49,263 new regular posts. Unused previously sanctioned 17,620 posts were abolished and 5,650 dying cadre posts will be eliminated after retirement of resignations. A large-scale mock drill on flood and landslide rescue operations was conducted across 13 locations in West Tripura on Wednesday to assess the district disaster preparedness. Over 1,500 personnel from disaster response forces and related departments participated, with the main staging area set up at Hapania Fairground. More than 50 emergency vehicles, including rescue vans and service units, were deployed. The exercise was supervised by the National Disaster Management Authority NDMA, with senior officials Sudhir Badvarat and Revenue Secretary Prijesh Pandey inspecting the operations. IGM Hospital served as the nodal medical facility for coordinating health responses during the drill. District Magistrate Dr. Vishal Kumar said the drill highlighted effective coordination among central, state and local agencies. He assured that the situation across the district remained under control despite ongoing rainfall. Water levels are within safe limits. Residents in low-lying area are advised to take
precaution, but there's no immediate cause for concern, he stated. The state administration is expected to act on expert suggestions to further strengthen disaster resilience. जो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये ऑरेंज अलर्ट में है, पहले येलो अलर्ट में था बट आज ऑरेंज अलर्ट में है। ऑलरेडी हमने हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, खासकर अगरतला टाउन में पंप हाउसेज काम कर रहे हैं और अभी तक जो रेनफॉल है इससे यही जानकारी मिली है कि अभी कोई खतरे की संभावना नहीं है, परंतु अगर कोई भी असुविधा आती है तो उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। हमारे रिलीफ सेंटर्स, हमारी जो टीम है NDRS SDRF की रेडी है, फायर सर्विसेज की भी टीम रेडी है, साथ ही साथ हमारे जो मिटिगेशन प्लान है जैसे वाटर रिसोर्स का एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथनिंग का काम है वो भी चल रहा है और पंप हाउसेज भी फंक्शनल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो अनुमान है कि 1-2 दिन ये बारिश रह सकती है, इसमें किसी भी तरह की संकट की हम उम्मीद नहीं करते हैं और किसी भी तरह संकट अगर आता भी है तो वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। हावड़ा रिवर का जो पानी है वो डेंजर लाइन से नीचे बह रहा है और जब लास्ट 3-4 महीनों में उसके जो एम्बैंकमेंट है उसकी स्ट्रेंथनिंग भी की गई है, तो उम्मीद करते हैं कि हावड़ा रिवर का पानी आने वाले 1-2 दिनों तक स्टेबल रहेगा और इसमें जनरली लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु हम तभी आपसे निवेदन करते हैं, खासकर जो लोग एम्बैंकमेंट से रिवर की साइड पे रहते हैं वो लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशियस रहने की ज़रूरत है और किसी भी हमारी प्रशासन की तरफ से कोई सिग्नल, डेंजर सिग्नल या अवेयरनेस के हिसाब से वो बाहर उस अपने घर से प्रोसीड कर सकते हैं, परंतु जो लोग एम्बैंकमेंट के दूसरी साइड है, मतलब जो सेफर साइड है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडिंग वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल मॉक ड्रिल का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इस मॉक ड्रिल में फ्लड और लैंडस्लाइड से रिलेटेड इंसिडेंट्स का हम लोगों ने किस तरीके से फ्लड और लैंडस्लाइड के केसेस में रेस्क्यू करते हैं, इसका आज हम लोगों ने तैयारी करी। इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से श्री सुधीर भाल जी, उन्होंने कई जगहों का इंस्पेक्शन किया, साथ में रिस्पेक्टेड रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री ब्रिजेश पांडे सर ने भी उनके साथ कई जगहों का जो रेस्क्यू एरियाज़ हैं, जो स्टेजिंग एरियाज़ हैं, उसका इंस्पेक्शन किया। टोटल वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 13 लोकेशंस हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को किया गया और इसमें सबसे बड़ी जगह जो स्टेजिंग एरिया था वो स्टेजिंग एरिया जो था वो हपानिया फेयर ग्राउंड था। हपानिया फेयर ग्राउंड में लगभग 1500 से ऊपर डिज़ास्टर और उससे रिलेटेड पर्सनल्स को मोबिलाइज किया गया। 50 से ज़्यादा व्हीकल्स ने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और 13 लोकेशंस पे हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। इस दौरान IGM हॉस्पिटल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया था फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ और मॉक ड्रिल के लिए, और जो नेशनल लेवल्स के एक्सपर्ट थे उन्होंने इस पूरे एक्सरसाइज का इंस्पेक्शन किया, उनकी ऑब्जर्वेशन थी और वो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एवं पूरे त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो डिज़ास्टर रिलीफ और रिस्पांस जो तैयारियां हैं उससे सेटिस्फाई दिखे और उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग और वर्कशॉप, वो हम स्टेट से साथ मिलकर करेंगे। परंतु उन्होंने आश्वासन दिया और वो आश्वस्त थे कि हमारी जो तैयारियां हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे स्तर पर हैं और पूरे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो हमारी जो टीम है जो मल्टीपल एजेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट एजेंसी हो या लोकल हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो टीम है, ये फील्ड पे लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएगी और जान और माल की हानियों को मिनिमाइज कर पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा आने पर ये हमारी जो टीम है ये असरदार रहेगी।
Prime Minister Narendra Modi was on Wednesday conferred with Namibia's highest civilian award, the Order of the Most Ancient Well-Wisher Mirabilis, during his first official visit to the Southern African nation. The award was presented by Namibian President Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, who hailed Modi's contribution to global peace, justice and socio-economic development. Expressing gratitude for the honor, PM Modi said, "It is a matter of great pride and honor for me to be honored with the Well-Wisher Mirabilis." Stressing India's-Namibia's relation, Modi further added that it is a witness to the everlasting friendship between India and Namibia, and he feels very proud to be associated with it today. He dedicated this honor to the people of Namibia and India, their continuous progress and development and unbreakable friendship. A true friend is recognized only in difficult times. India and Namibia have stood by each other since the time of their freedom struggle, he said. मिराबिलिस से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति जी का, नामीबिया की सरकार और नामीबिया के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। फ्रेंड्स, नामीबिया का वेल-विशियर, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है, जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है और आज इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। A leaked audio recording has revealed that former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina personally ordered security forces to open fire on student protesters last year, resulting in the deaths of at least 1,400 people, according to a BBC investigation. The unrest stemmed from massive student-led demonstrations against the controversial quota system in government jobs that many claimed discriminated against meritorious candidates. The BBC has verified the authenticity of the audio, in which Hasina is heard instructing a senior government official to deploy lethal force. Use whatever weapons needed, shoot wherever you find them, she reportedly said during a phone call from her official residence, Ganebagan, on the evening of July 18, 2024. Within hours, paramilitary units were deployed across Dhaka and opened fire on crowds using military-grade rifles. Police documents accessed by the BBC confirmed the use of combat weapons across 5 university zones and adjacent districts. The protests erupted after Hasina's government passed legislation expanding a controversial quota system in public sector jobs. Students accused the Awami League of institutionalizing discrimination against merit-based candidates in favor of political loyalists and select social groups. Though similar protests had occurred in 2018, the scale in 2024 was unprecedented, drawing in students, academics and civil rights activists across the country. The government's violent response only intensified the unrest. According to the United Nations Human Rights Office, more than 1,400 people were killed and thousands detained between July and August 2024. During the crackdown, several international rights groups have since called for an independent probe into the violence. UK-based human rights lawyer Toby Cadman, who is advising Bangladesh's special tribunal, told the BBC the audio is damning, clear and corroborated by other evidence. The recordings are properly authenticated and aligned with internal memos and field level deployment orders.
Cadman said, adding that the directly implicate Hasina is in command-level decisions. The prosecution is also expected to present digital transcript, chain of command notes and real-time deployment logs to build the case for state-led mass killings. An Awami League spokesperson, however, dismissed the leaked audio as selectively edited and denied any intent of lawful violence. But the party has not released a full version of the tape or challenged its authenticity in the court. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, or the National Solar Mission, was launched on 11th January 2010. JNSM